last CR session for this year. CLAT, you guys have been with us for the longest time and of course एग्जाम अब आ गया है बिल्कुल पास, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना. सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सीआर सेशन विद यू, बट ऑफ कोर्स आई होप यू नो हम मैराथन लेके आ रहे हैं 1 दिसंबर को, तो वो वाला मिस मत करना. विल अनाउंस इट, अभी मैं दिखाता हूँ स्लाइड वगैरह, बट वो मिस मत करना. बट दिस इज द सीआर लास्ट सेशन. आज जल्दी जल्दी सेशन करते हैं एंड विल रैप इट अप. विल डिस्कस फ्यू पॉइंटर्स, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और रैप अप करेंगे सो दैट यू गाइज आर रेडी फॉर द शो ऑन 3rd December. Let me quickly see किसी ने ज्वाइन किया कि नहीं. ओके, आई कैन सी अ bunch of you. Right, I can see a lot of you. Sai, Karima, Gopal, Ishita, Harshvardhan, Devishri, Swapnil, Diksha, and some of you have joined on the app also. Devtaru, Nev, Vaishnavi, Tanushka, Tishika, Jarek, Chidambar, Alia, Garima, Tuba, Himashri, Titishka. Good evening, guys. चलो, now remember everyone, this being the last session, we would also keep it a little generic. थोड़ा थोड़ा generic रखेंगे, थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लेंगे, कैसे कैसे दिक्कतें आ रही हैं. सो लेट मी स्टार्ट बाय टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी वेरी बेसिक. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग में ही. लेट मी जस्ट राइट इट हियर. If you look at your preparation, it can be done with all the 5 sections. It can be done with only CR section. Because this is a CR class, critical reasoning की class है, तो मैं critical reasoning की बात करूँगा, बाकियों की बात नहीं करूँगा. So let's say that there are 3 different areas which you have discovered in CR. For example, you have discovered कि मेरे कुछ areas बिल्कुल strong हैं. For example, let's say conclusion questions I always get right, और whatever assumption questions मेरे हमेशा सही हो जाते, कुछ भी हो सकता है. You may have discovered कि भाई मेरे से assumption questions नहीं हो पाते, right? You may have discovered that in strength and weaken you are moderately okay. Inference भी हो जाते हैं but assumption नहीं हो पाते. You may have discovered conclusion हो जाते हैं but parallel logic नहीं हो पाता. या you have discovered flaw in the logic नहीं हो पाता. Whatever, okay, every individual would have individual lists, right? Now the core important point is at this juncture, अब इस वक्त याद रखना है कि अब आपको सबसे पहले इस वाले को गोली मारना है. Please remember everyone, 1 week before the exam, if you think some area is weak, just forget it. भूल जाओ. Forget it like a bad dream. समझ लो वो उस एरिया के साथ it just didn't work out. You guys were not meant to be together. तुम्हारा assumption या parallel logic या flaw in the logic या जो भी वो टॉपिक है उसके साथ तुम्हारी इस ज़िंदगी में बनने वाली नहीं थी. झगड़ा हो गया, it didn't work out, ब्रेकअप हो गया है, वो अपने रास्ते तुम अपने रास्ते. अब एक दूसरे को भूल जाने में ही भलाई है, क्योंकि साथ रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी. ना तुम उसे समझ पाओगे ना ही वो तुम्हें समझ पाएगा, तो आपस में दिक्कतें ही आएंगी. तो वीक वाले एरिया को टाटा बाय बाय, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, बट उसे भूलने में ही भलाई है और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है. नाउ तो मार्क्स कहाँ से आएंगे? मार्क्स आएंगे स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट एरिया से. आई हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर, आई रिपीट. कंक्लूजन, assumption, inference, strengthen and weaken. These 5 question types will be 70 to 80% of your CR. Now even if you are good or bad in 1 or 2 areas, it doesn't matter, you can still manage to get 70-80% questions right. तो याद रखना everybody, last 1 week में I have seen this every single year. Students go around, they will attend 100 classes, they'll watch 200 videos, they'll watch videos on what to do, how to do, कैसे करें, शॉर्टकट, ये 5 ट्रिक, वो 5 ट्रिक. अब देर हो गई है, भूल जाओ. स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट एरिया से काम चलाओ, वीक एरिया को भूल जाओ. दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट वाइटल पॉइंट. डू यू अग्री? यस और नो? डू यू डू नॉट अग्री? वट एवर, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एक बार मैं जरा चैट भी चेक कर लेता हूँ तब तक. Devtaru, Swati, Anisha, Seema, good evening guys on the app. I just saw your names.
अब ज़रा देख लूँ एक बार चैट में कोई कुछ बोल रहा है क्या. ऑल राइट. Subhashini, that's totally fine. I mean, close options sometimes would be there. Don't worry. We have discussed close options also. Today also in this session I'll discuss close options. Okay, close options तो करेंगे एक बार. मैंने 2-4 क्वेश्चन बनाए हैं इस तरह के. All right. So Chidambar, yes, that's true. Guitar with Siddhant, भूल जा. हाँ. लॉजिकल का सेक्शन कौन सा क्लैट में आ रहा है? हैं? उस बात की क्यों चिंता करते हो जो होने नहीं वाला? वेयर आर दे गोइंग टू आस्क यू एलआर क्वेश्चंस इन क्लैट में कौन सा एलआर पूछेंगे? भूल जाओ. जो होने वाला है उसके बारे में सोचो, है ना? क्यों टेंशन लेना? ऑल राइट. स्वप्निल, ऐसा तो तुमने अपने नाम को टाइप किया है, समझ नहीं आता. स्वप्निल, हाँ. स्वप्निल, यस, विल डिस्कस इट ऑल्सो, डोंट वरी. टू क्लोज ऑप्शंस तो हमेशा की पनौती है, वो कहीं ख़त्म ही नहीं होता. वो उसमें रोना आता ही आता है, सबके साथ होता है. नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं. ऑल राइट. तितिष्का, शांत शांत भीम शांत. समय लगता है हर चीज़ में. कारज धीरे होत है काहे होता धीर. तो थोड़े थोड़े से रिविजन करेंगे, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बस. और क्या करना लाइफ में, है ना? आज ये वाला सेशन लास्ट है. सो आई हैव डन ऑल दीज 3 सेशंस अर्लियर. प्लीज वॉच देम इफ यू हैव नॉट डन देम. कंक्लूजन, अजम्पशन, स्ट्रेंथ एंड वीकेंड हम कर चुके हैं. आज हम थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं. तो आपके लिए एक छोटा सा पैसेज, प्यारा सा, प्लीज रीड इट. फिर मैं आपको दूंगा 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में से आपको बताना होगा करेक्ट आंसर, है ना? तो ज़रा मज़े से पहले रीड कर लो. मैं भी रीड कर लेता हूँ, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा. वैसे मुझे पता तो है ही क्या लिखा है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड ऑल्सो. गरिमा भी करते हैं. ओके, एक और ट्राई करते हैं. चलो, स्वप्निल देखते हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बट आई ट्राई टू हेल्प यू. ओके, चलो. क्या हुआ? पैसेज देख के तुम लोग ये इमोजीज भेज रहे हो क्या? क्या छोटा पैसेज दे दिया इसलिए? इट्स ओके. अब नाउ आई कांट गिव यू 400 वर्ड्स वाले पैसेजेस ना आज, है ना? क्लैट वाला सीन नहीं बना सकता अभी ना, बिकॉज जगह ही नहीं मेरे पास. इतने छोटे से स्क्रीन में कितना ही करूंगा. और कोई बात नहीं है. सो प्लीज डोंट गेट, मतलब इधर पैसेज आएगा ना एक्चुअली. वॉट एवर, दिख तो रहा ही होगा ना. चलो, सब दुखी हो रहे हैं, कोई बात नहीं. छोटा सा प्यारा सा पैसेज है, पढ़ लो जल्दी से. एक हफ्ते में क्लैट है. चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ जल्दी से. ओके, जल्दी जल्दी. If history doesn't follow any stable rules and if we can't predict its future course, why study it? मतलब एकदम दिल की आवाज़ है. क्यों ही पढ़ना, क्यों पढ़े? It often seems that the chief aim of science is to predict the future. Da da da. Similarly, historians are asked to examine the actions of our ancestors so that we can repeat their wise decisions and avoid their mistakes. अच्छा जी. But it never works, obviously, like that, because the present is just too different from the past. सही बात है. It's a waste of time to study Hannibal's tactics in the Second Punic War so as to copy them in the Third World War. सही बात है. What worked well in cavalry battles, घुड़सवारी, घोड़े पे चढ़ के लड़ते थे ना वो वाला, will not necessarily be of much benefit in cyber warfare. Science is not just about predicting the future, though. Scholars in all fields often seek to broaden our horizon, thereby opening before us new and unknown futures. This is especially true of history. Though historians occasionally try their hand at prophecy, the study of history aims above all to make us aware of possibilities we don't normally consider. Historians study the past not in order to repeat it, but in order to be liberated from it. One question you can clearly expect from this kind of a passage is, author कहना क्या चाहता है? That's absolutely expected question. What is the author's main point? Now remember everyone, before you go to the answer and question, एक लाइन में सोचो ऑथर कहना क्या चाहता है. ऑथर महाराज ये लिख क्यों रहे हैं? कैन यू गाइज जस्ट डू दिस 10 seconds everyone, just think what is the author trying to tell me? ऑथर क्या बताना चाहता है मुझे? क्या बोल रहा है ये सब? जल्दी. आई एम श्योर यू गाइज हैव डन दिस, है ना? कर लिया दिमाग में सब, शैडो आंसर बना लिए. चलो अब आगे क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द पैसेज एवरीवन? जल्दी से.
ये क्वेश्चन मुझे 2 बार क्यों दिखाई दे रहा है? छप गया होगा। ओके, जल्दी से एवरीवन। So there are 4 options, everyone. The futility of studying historical tactics, the limited success of historical prophecy, the importance of avoiding historical mistakes, the liberating purpose of historical study. 4 अलग अलग ऑप्शंस आपके पास, आपके सामने आ गए हैं, और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से एवरीवन। देखो मैंने जादू से गायब कर दिया है ना। अब बताओ करेक्ट आंसर। चलो डी 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 सब कह रहे हैं डी। इतने लोग गलत नहीं हो सकते, क्या बात है, तुम लोग समझदार भी हो और स्मार्ट भी। आलिया से इज कंपेयरिंग हिस्ट्री विद साइंस, हाउ इट डजंट प्रेडिक्ट फ्यूचर बट साइंस डज। ओके, ऑल राइट, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो लेट्स सी, अब देखते हैं कि आंसर कहाँ पे। Question passage starts by saying, if history does not follow any stable rules and if we cannot predict its future course, why study it? And the author ends by saying, historians study the past not in order to repeat it, but in order to be liberated from it. It says that history aims to make us aware of possibilities we don't normally consider. हिस्ट्री पढ़ के फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सही बात है, बट हिस्ट्री पढ़ के ये बोल सकते हैं, वी नो, वी कैन गेट टू नो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है, एंड दैट कैन मेक अस फ्री फ्रॉम आवर पास्ट। मीन्स व्हाट? दैट वी विल नॉट डू द सेम थिंग दैट द पास्ट had done or people in the past had done. So history in a way makes us free from the past. Is the passage saying it is futile to study history? No, the author is saying something good about studying history also. Limited success of historical prophecy, it has been mentioned in the passage, but it is not the main conclusion. Very clearly, option C says importance of avoiding historical mistakes. Historical mistakes means mistakes that are huge. Paragraph does not talk about it. Then it's about liberating yourself from the historical past. That's exactly what option D is talking about. The correct answer होगा D. Now let me ask you a question. पैसेज पढ़ के लगा होगा ना यार ये क्या ही बोल रहा है, बट लुक एट द ऑप्शंस, दे आर सो इजी. सो इवन इफ यू फेस अ हार्ड पैसेज, रिमेंबर गाइस, द क्वेश्चंस कैन बी वेरी इजी. क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना. इजी बात पे अगला पैसेज थोड़ा लंबा है बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको. जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर. नहीं, पहले पढ़ लो फिर बताओ करेक्ट आंसर. ओके. So Akshat, is it clear? I hope you guys understood how I eliminate options or how options should be eliminated. Close options दिख रहा है ना? आपको हर वर्ड पे ध्यान देना है ना. You have to manage and you have to compare and manage the differences. कि अच्छा इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, तो आंसर ये हो सकता है. Eliminate, right? Okay, सुभाषिनी, that's correct. जल्दी से पढ़ लो एवरीवन, फिर करते हैं बातचीत. Tuba says passage was easy. Tuba, बाकी लोग will not agree, but ठीक है. Yes, please. जल्दी जल्दी read everyone. So Mahip, Tuba, Samriddhi, Shreyas, Vaishnavi, you guys got it right on the app. Yep. चलो. छोटा सा प्यारा सा पैसेज, मेन आइडिया पकड़ लो. मेन आइडिया, उसी पे क्वेश्चन आएगा. मेन आइडिया.
चलो सुभाषिनी, इज दैट सो? अब मैं I'll show you like how to really solve questions fast and get the right answer, but you guys are smart enough, तुम आंसर पहले ही बता दोगे। तो अब ज़रा क्वेश्चन देख लो और मुझे आंसर बता दो, और फिर मुझे अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू सवाल। जल्दी बताओ करेक्ट आंसर एवरीवन। Devishri says talk about being confused. Yes Devishri, even I was confused, but I can't afford to be confused, no? So मैंने थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो समझ में आ गया क्या कहना चाहता है ये। But remember everyone, we don't get marks for reading, we get marks for eliminating and getting the right answer, है ना? अपने को मार्क्स कमाना है, मार्क्स कमा के हम कुछ कर सकते हैं लाइफ में। Harshvardhan, that's a good one. Tuba, Vaishnavi, Samriddhi, Shreyas, you guys, Mahip, on app, please read and tell me the correct answer. चलो डी, चलो आंसर आने लग गया भाई। डी या डी। ओके, एवरीबडी इज सेइंग डी सो फार। देवीश्री, हर्षवर्धन, हिमाश्री, गार्गी, गौरव, गरिमा। 6 में से 3 नाम जी से शुरू होते हैं। अनन्या, जागृति, जीनियस मेकर। समृद्धि's आंसर इज सी, माहिब्स आंसर इज डी। ओके, प्रियंका डी। यूट्यूब पे तो सब डी बोल रहे हैं, नो बडी हैज सेड एनी अदर आंसर। आई थिंक आलिया ने बोला है बी, बाकी लोगों ने सब ने डी बोला है। ऐप पे वैष्णवी ने डी बोला है, वैसे समृद्धि का सी है, और बाकी लोगों ने अभी मुंह नहीं खोला, चुपचाप बैठे हुए हैं। डी। ऑल राइट एवरीवन, दिस इज द लास्ट सेशन टुडे। तो आज थोड़ा धमाका होना चाहिए ना, करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो मैं आपको करता हूँ हेल्प, देखो हेल्प करते, हेल्प। लेट्स रीड दिस। Peirce rejected Descartes' method of doubt. पियर्स जो था ना, उसने डेकार्ते के मेथड को कर दिया रिजेक्ट। बोला बकवास मेथड है आपका, बहुत ही बेकार है, बहुत ही यूजलेस है, वर्थलेस, एकदम बेकार। नाउ इफ somebody rejects your idea, will you say the person disagrees with you? Don't you think disagree is a very mild word? It's like saying that Palestine, Israel and Hamas has a disagreement. If they're fighting a war, it's not about disagreement. The word is very mild. It has to be much harsher, much harder. Degree समझ में आ रही बात? I hope you understand the degree part यहाँ पे. Can I say that in Afghanistan, Taliban is ruling in a slightly disagreeable manner. It's beating people up lightly. You are making fun of the entire situation because you are using words which are not appropriate for the occasion. है कि नहीं? यही तो language is what? Language is this only. Peirce rejected Descartes' method. Descartes का मेथड बोला बकवास है, वर्थलेस है, तुम कह रहे हो डिसएग्री कर रहा है। Now look at the other options. Peirce critics का मतलब होता है criticize करना. Critics also means to evaluate, to assess, and then saying something. Disagree basically means you are saying this, I don't agree. Critics means I will tell you what are the negatives in your approach, what are the positives in your approach. So there's a difference, guys. Pay attention. Critics means I will assess, I will say this is right, this is wrong. Disagree means I'll say I don't agree. I will not tell you what is good, what is bad, but I don't agree. Okay? So let me give you an example. Tonight after this session, you tell your parents that you want to be an astronaut. आज घर पे टहलका मचाओ, बोलो आज एस्ट्रोनॉट बनना है घर पे। आज सर, आज पढ़ाई खत्म, अब हम बनेंगे एस्ट्रोनॉट। Will your parents disagree with you? Let me know in the chat, everyone. You tell them that you want to be a tattoo artist.
आज बोलना है, ओके घर पे टैटू आर्टिस्ट बनना है मुझे. विल दे डिसएग्री विद यू? यू रियली थिंक सो? है ना? डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे हाँ वी डोंट अग्री विद योर चॉइस आई थिंक. शुरू करेंगे पता है कैसे? टैटू आर्टिस्ट बनना है तो अभी से बन जाओ, रोड के किनारे बैठ जाओ टैटू मशीन लेके. टैटू आर्टिस्ट ही क्यों बनना है? टिकटॉकर बन जाओ, छपड़ी बन जाओ, बाइक लेके रोड पे स्टंट करो, है ना? यही क्यों करना है? रैपर बन जाओ, हनी सिंह बन जाओ. देन दे विल टेल यू देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है बट टैटू आर्टिस्ट बन के कितना कमा लोगे? नेम सम फेमस टैटू आर्टिस्ट, कितना कमाते हैं वो? दे विल क्रिटिक, दे विल टेल यू द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. दे विल टेल यू ये मत करो बिकॉज ऑफ दिस, ये कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट. Disagreement is different. I hope that explains the answer. This is how you eliminate close choices. Is it clear, everyone? The correct answer is B. B को ध्यान से पढ़ो. Peirce critics Descartes' emphasis on clarity. Descartes said, Peirce argues that though needs more than a sense of clarity, it also needs a method for making ideas clear. Descartes said ideas should be clear. Peirce said not only that ideas should be clear, but there should be a method of doing that. So he criticized Descartes' emphasis on clarity, and then he said pragmatic method is there for determining the truth. Now look at option D. Peirce disagrees with Descartes' doubt method, presenting the pragmatic method as a more effective approach. More effective approach means Descartes' approach is also good, but my method is better. This guy did not say that. This guy said, your method is bakwas. I'll tell you what is wrong in your method. This is a huge difference. Is this difference clear, everyone? This is how you eliminate choices. यही तो elimination होता है और क्या होता है? एक कह रहा है क्रिटिक, एक कह रहा है डिसएग्री, वही से कहानी शुरू हो जाती है. आई होप दिस इज क्लियर. हाँ चलो, सब कह रहे हैं टैटू आर्टिस्ट बनने में हमारे घर वाले मदद करेंगे. अच्छा, तुम्हारे ऊपर टैटू बना देंगे? हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली. सो आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी. यही उम्मीद है, देखो थर्ड को तुमसे यही उम्मीद है. एनालाइज एवरी सिंगल वर्ड, पे अटेंशन टू एवरी सिंगल वर्ड. इतने दिनों से हमने क्लासेस किए, यू गाइस शुड बी गुड एट इट बाय नाउ, एंड सम ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिक, आई नो दैट, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू दिस बिकॉज बार बार तो ऑप्शन देता नहीं है ना क्लैट, एक बार ही एग्जाम देने को देगा. दिस क्वेश्चन अगेन इज, रिमेंबर एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज अनदर एग्जांपल ऑफ क्लोज ऑप्शंस. आप करके देखो, आप समझ जाओगे जल्दी से. मुश्किल नहीं है बट ऑप्शंस क्लोज हैं. सो आई वांट यू गाइस टू ट्राई इट आउट जल्दी जल्दी. चप्पल से टैटू बनेगी. ऑल राइट. Devishi says the paragraph is smaller than the option. I agree. When I made up the options and all, तो मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा डिसबैलेंस्ड लुक है, बट व्हाट टू डू. क्वेश्चन मुझे बनाना था बिकॉज आई वांटेड टू शो यू हाउ टू एलिमिनेट एंड ऑल, है ना. चलो, समृद्धि हैज आंसर्ड. हाउ अबाउट अदर्स? इट्स एन ईजी क्वेश्चन एवरीवन, वेरी ईजी क्वेश्चन, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, दैट्स इट, और आपको आंसर मिल जाएगा. चलो, पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग. बी 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 ऐप पे भी माहिब, टूबा, वैष्णवी, समृद्धि, वेयर आर योर आंसर्स? समृद्धि हैज आंसर्ड, ओके. हिमश्री, देखो अब मैं आपको एकदम जल्दी से आंसर बताता हूँ, कोई ज़्यादा इसमें लफड़ा है ही नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. Experienced chef discourage using a particular type of spice in hot and spicy dishes, claiming it can overpower the overall flavor. However, a recent culinary event showcased dishes using this spice in unique combinations, and the result was surprisingly delicious. Find the parallel logical option.
ऑप्शन वन says many culinary experts recommend avoiding garlic in desserts. गार्लिक कौन खाता है डिजर्ट्स में? गुलाब जामुन में गार्लिक, एज इट मे नेगेटिवली इम्पैक्ट द स्वीट। में नेगेटिवली, मुझे तो अभी से टेस्ट आ रहा है उसका जलेबी में गार्लिक डाल रहा हूँ। हाउएवर, a renowned pastry chef has successfully incorporated garlic into chocolate desserts, proving that it can enhance the overall flavor. हमारे इंडिया में तो ये चप्पलों की बारिश हो जाएगी इसके ऊपर। बाई गॉड, कह रहा है चॉकलेट में इसने गार्लिक डाला है, इसका कुछ नहीं हो सकता इंडिया में। बट एनीवेज, व्हाई इज नॉट द आंसर? ये तो मुझे सही लग रहा है, यही तो ऊपर भी लिखा है, यही ऊपर नीचे भी लिखा है कि रेकमेंड नहीं करते हैं, बट किसी ने कर दिया फिर वो अच्छा हो गया, है ना। व्हाई नॉट ए एवरीवन? हाँ आप देखो, अब आ गया, ए भी आ रहा है आंसर। हर्षवर्धन ने ये बोला है। देविश्री, यस इट्स अ पैरालॉजिक क्वेश्चन। अच्छा, सी भी आ गया, ओके ओके, आई हैव टू चेक सी ऑल्सो। समृद्धि says that's a disgusting combo. Anirudh says that's a crime. I agree. I mean, chocolate, garlic, कौन खाता है यार गार्लिक जामुन? All right, everyone, let's check C. Renowned nutritionists advise against including certain spices in a low sodium diet as they may contribute to higher sodium levels. However, a recent study showed that incorporating these spices in moderation can add flavor without significantly affecting sodium intake. Check the problem, guys. This talks about changing the taste, right? This one talks about taste. This one also talks about taste, right? But this one talks about sodium intake. It's talking about how much you are having it. This is not parallel. आंसर ए और बी में से कोई होगा। माई क्वेश्चन इज वाई नॉट ए? कौन बताएगा ए क्यों नहीं हो सकता? जल्दी बताओ। ए इज नॉट द आंसर, वाई नॉट? आलिया इज सेइंग ए हो सकता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेगेटिव इन ए। अरे डिस्करेज का मतलब ही तो क्या होता है? अवॉइड करना ही होता है ना, है। डीके क्रिएशंस, तुम एक तो नाम चेंज करो पहले। बी लग रहा है मतलब आकाशदीप आपके पास आंसर नहीं है, आप दिल की बात बता रहे हो ना, मेरे दिल की बात है बी ए। हाँ अमन, वेरी गुड, गुड ट्राई अमन, यस। यहाँ पे देख लो, पैराग्राफ हियर सेज यूनिक कॉम्बिनेशंस using this spice in unique combinations. Option 1 does not talk about it, but option B talks about it. This is closer. हमें क्या ढूंढना है? Closely. कौन सा है ज़्यादा क्लोज? ऑप्शन बी। तो हो गया आंसर। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। When you are in doubt, please compare. जब भी डाउट हो कंपेयर करो, दैट्स इट। दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है? यहाँ पे this one talked about combination, this does not talk about combination, this talks about combination. हो गया आंसर। इसी वजह से क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब सा हो गया है, बिकॉज मुझे अकॉर्डिंगली ऑप्शंस तैयार करने पड़े। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना, इसी वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बट आई होप यू गॉट द आइडिया। पैराग्राफ छोटा, ऑप्शन बड़े बड़े हो गए, बट आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एब्सोल्युटली। चलो, आलिया इज क्राइंग। आलिया तुमने सही तो किया था आई थिंक, तुम व्हाई आर यू क्राइंग? अच्छा, खुशी के आंसू है ये। चलो, इज इट क्लियर एवरीवन ऑन द ऐप? अनिरुद्ध, समृद्धि, वैष्णवी, यू गाइज गॉट इट राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, एब्सोल्युटली। अब तुम लोग स्मार्ट हो गए हो। यस, चलो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस आफ्टर क्लैट 24। क्लैट 24 आके फिर पार्टी मत करने लग जाना। 3 दिसंबर को हम शुरू हो जाएंगे लाइव डिस्कशन, पेपर पैटर्न, एक्सपेक्टेड स्कोर, कॉलेजेस कौन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो मिस मत करना। एलेट का भी करेंगे इफ यू राइटिंग एलेट ऑन 10 दिसंबर, है ना। अगला सवाल, अब खत्म होने वाला है सेशन बहुत जल्दी एवरीबॉडी, तो अगला सवाल आपके सामने आ गया। अति मधुर सवाल है ये, तो जल्दी से मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है। अरे अभी नहीं जा रहा मैं, डोंट वरी, अभी कौन जा रहा है, अभी तो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। संजय, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अक्षत कह रहा पार्टी क्या होती है?
हाँ देखो एनएलयू में भी पार्टी कर ही सकते हैं और अच्छी वाली हो जाती है, तो आई थिंक वही करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। घर वाले भी बुरा नहीं मानेंगे। चंदन, आप क्लैट में जितनी मर्जी उतने अटेम्प्ट दे सकते हो। आप चाहो तो 1,000 अटेम्प्ट दे दो, बट सोचना क्यों उसके बारे में, है ना? क्यों क्लैट कंसोर्शियम के जेब भरनी? भाई 4,000 का फॉर्म आता है, वाई डू दैट? एक बार में निकालो पैसे, मतलब ऑनेस्टली किसी के भी हों, पेरेंट्स के भी पैसे हैं तो पैसे तो है ही ना उनके, है ना? चलो भाई करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। Those on the app, please tell me the correct answer. C. Okay, Samriddhi says C. All right. चलो सुभाषिनी से सी। सी, बट मुझे तो वेट करना पड़ेगा, अभी और आंसर्स आ रहे हैं। सी 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 सी। ऑल राइट, बी, राहुल का बी। संजय सी, महक सी, रमेश सी, रामाकृष्णा कृष्णन सी, सी सी। ऑल राइट एवरीवन, लेट मी सी। है ना, बड़ा क्वेश्चन आसान है। ये कहता है कि अति मधुर इज अ शुगर सब्स्टिट्यूट and is used in gulab jamun dessert, gulab jamun ice cream, but it has a potential allergic reaction also, है ना, when it was given in high doses. फिर ये कहता है टू कंज्यूम एन अमाउंट ऑफ अति मधुर इक्विवेलेंट टू द क्वांटिटी गिवन टू द रैट्स, an individual would need to eat 30 servings of अति मधुर laden desserts daily. देखो कितना मतलब वेल्ला आदमी है जिसने पैसेज लिखा है। कह रहा है कि अति मधुर जो है ना बड़ा अच्छा होता है, बट उसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है जब बहुत खिलाते हैं। तो बहुत खिलाओगे तो रिएक्शन तो होगा ही ना, मतलब कॉमन सेंस है। कहता है इंसानों को अगर आप जितना रैट को दिया था ना उतना दोगे तो इंसानों में भी रिएक्शन होगा, लेकिन जितना रैट को दिया था उतना अगर खिलाना हो तो मतलब जितना इंसानों को रिएक्शन होगा इतना खाना है, तो आपको 30 सर्विंग्स ऑफ अति मधुर वाले डिजर्ट्स खाने पड़ेंगे। देयरफॉर अति मधुर इज सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्या मान के बोल रहा है ऑथर? ऑथर कहता है 30 टाइम्स खाना पड़ेगा रोज, इसलिए अति मधुर सेफ है। तो कॉमन सेंस है, यानी ऑथर मानता है कि 30 टाइम्स कोई खाएगा ही नहीं रोज। कोई पागल थोड़ी ना कि 30 गुलाब जामुन खा रहा है रोज के, गुलाब जामुन ही बन जाएगा वो बाद में। विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल टॉक अबाउट 30 सर्विंग्स, और कोई बात ही नहीं करेगा। हो गया आंसर। पीपल कंज्यूम लेस देन 30 सर्विंग्स एवरी डे। हो गया, यही मानता है ऑथर, और क्या मानता है? तभी सेफ है, अदरवाइज सेफ हो ही नहीं सकता। इफ यू हैव अ डाउट यूज निगेशन मेथड एवरीबडी, निगेशन मेथड। पीपल कंज्यूम फ्यूअर देन को कर दो मोर देन 30 सर्विंग्स ऑफ अति मधुर लेडन डेजर्ट्स पर डे। अगर ये सच है कि लोग 30 से ज़्यादा सर्विंग्स रोज खाते हैं, 50 गुलाब जामुन खाते हैं अति मधुर वाले, तो क्या अति मधुर सेफ रहेगा? सेफ रहेगा क्या? नहीं रहेगा, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। दैट दिस मीन्स दिस मस्ट बी दी करेक्ट आंसर। हो गया assumption खत्म। सो वेल डन एवरीवन, यू गॉट द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। Yes, it's an assumption question everyone. This is very clearly assumption. Must be true basically means according to the author it should be correct, right? So very quickly, the question said for getting the same kind of reaction that the rats did, you have to eat at least 30 servings of Ati Madhur, therefore you are safe. Means what? The author believes people don't eat 30 servings of Ati Madhur every day. Simple. That's exactly what option C is saying. हो गया आंसर। कितना टाइम लगता है ना? चलो, ये क्वेश्चन भाग क्यों गया? अरे ये रहा, मुन्ना भाई भाग गए थे अभी। चलो भाई, ट्राई द आंसर एवरीवन। फ्लॉ इन मुन्ना भाई's रीजनिंग। अक्षदा, आई थिंक सो। I just wonder gulab jamun with garlic कैसा होगा? I have never tried. So is this clear, Ranjana and Mahip? Mahip got it right. Mahi got it wrong. Shreyas, है ना? Gurneet, Gurmeet and Priyanka, you guys got it right. चलो, Titishka, always pray for questions that are not easy.
because when the paper is easy, cutoff goes up very, very high, and luck can play a bigger role. Okay, moderate paper is always good for hardworking students. So let's see, easy question. Priyanka said easy question. Priyanka, what is the answer? Let's see. Samriddhi, I hope you have answered for this one, right? है ना? C, you have answered. Okay, let's wait. अभी और भी आंसर्स आएंगे. चलो, Gargi said C. I'll wait. Rahul said D. बस A और B का इंतजार है. A और B बोलती एक्सप्लेनेशन चालू. हर्षवर्धन said A. Anshika says C. Anecdotes basically mean stories, personal stories. It's like, our parents, Nanaji, Dadaji, they are like, when I was a kid, I had a friend, he did this. That's an anecdote. Stories from one's life, general stories. Priyanka C, Ishita C, नहीं Priyanka D, Ishita C, Alia A, Hitesh A. यानी कि question मुश्किल है. Looks like the question is difficult. Samriddhi says between C and D. Okay, that means you guys need my help. चलो भाई हेल्प कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, हेल्प कर देता हूँ. चलो, लेट्स रीड इट एवरीवन. मुन्ना भाई. An acclaimed researcher argues that individuals who engage in regular physical exercise during their youth are more likely to maintain a healthy lifestyle in adulthood. However, this assertion is flawed. My friend Dr. Suman was actively involved in sports throughout her childhood. Yet, as an adult, she rarely engages in physical activities. Conversely, I did not participate in organized sports during my youth, and now I prioritize regular exercise as a crucial part of my routine. मुन्ना भाई ने क्या बोला? बोला सर्किट. रिसर्चर्स लोग कह रहे हैं that if you engage in regular physical activity when you are young, then you have a healthy lifestyle when you grow old, right? When you become adult. Bakwas. My friend Dr. Suman, she did not exercise when she was young, but she exercised when she was young, but see, she is not healthy anymore. She does not do anything physical activity. Now look at me. When I was young, I did not participate in any sports, but now I go to gym, exercise every day. Circuit says, bhai, your experiences and Dr. Suman's experiences do not disapprove the researcher's claim. Your anecdote may challenge the idea that all physical active youngsters become health conscious, but the researcher's statement is not making any sweeping claim. Now look at the beauty of the question, everyone. I hope you realize that the statement made by circuit is a distraction. It does not do anything here. Distraction है completely. Circuit ने जो बोला ना उसका zero value है. Because question says what is the flaw in Munna Bhai's reasoning? Does reading circuit's statement make any difference? It does not. सर्किट का स्टेटमेंट पढ़ के देखो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ के देख लो. Even if circuit's argument was not written, it would have made zero difference to your understanding of the argument. This is called a typical distraction. Now I have to find flaw in Munna Bhai's reasoning. It's a very simple flaw. Munna Bhai says there is a research, but it does not apply to my friend. It does not apply to me. Therefore, this research is bakwas. What is the flaw? The flaw is that he is using individual experiences to target, to refute a research. Let me give you a parallel example. Suppose my friend says, you know what? People say that the gravity pulls us down. But I have a friend who is a magician and he can levitate. उड़ता है वो ऐसे जमीन से ऊपर. Therefore, this
gravitation thing is useless. Bekar, bakwas. Researchers said COVID is a pandemic. But you know what, my friend, he was going out every day during pandemic. He did not get COVID. So this entire pandemic thing was bakwas. What is the flaw? The flaw is this person is generalizing on the basis of personal experience. कौन सा होगा आंसर? Let's read. He treats his own experience and the experience of his friend as though they have more weight as evidence than do the experiences of other people. हो गया आंसर. यही आंसर है. How hard was the question? Now I hope you like the question because पिछले क्वेश्चन में सबने बोला है तो बड़ा आसान है. तो अगला क्वेश्चन आ गया जिसमें काफ़ी लोगों ने गलती कर दी. क्यों? Because you did not understand the question properly, you did not interpret the question properly, है ना. I'll look at the other options also if you want. वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. राइट, चलो let's look at the other options everyone. Okay, for example, look at D. He attempts to refute a general claim by reference to non-confirming cases. How many cases? 2 cases. Although the claim is consistent with the occurrence of such cases. He attempts to refute a general claim by reference to non-confirming cases, although the claim is consistent with the occurrence of such cases. If you have done my classes earlier, you can clearly point out what is wrong with option D. I'll wait for 10 seconds. Let me see if somebody can find out. D has a very, very particular kind of problem that we use to eliminate options. Socho? Anybody? Chidambar, that's very good. Subhashini, can you try? What is wrong with option D? Remember everyone, option D is actually saying the same thing, but it is not the correct answer. I'll tell you the answer if I don't get it. So there are 2 problems. One is of course the word attempt. He attempts to refute, whereas this says he treats. Okay, so but suppose I say okay, he's still attempting, right? Agreed. This is a typical example of a broad option. This is called a vague option. Okay, read option A and then read option D and you will realize the difference. Option A is absolutely specific. He uses his experiences and the experience of his friend. Specific. Option A D says general claim by the reference to non-conforming cases. Not wrong, but in place of his experience of his friend, it says non-conforming cases. This is called a vague or a broad option. This can fit anywhere. This one is a specific one. Therefore, the correct answer. This will apply in B and C also. Okay. Halage B and C are easier to eliminate. D was a good option. Clear everybody? All right. Try again. This one should be the last question of the day. इसे तो गलत मत ही करना, बहुत ही लड्डू सवाल है ये. बेचारा सवाल बुरा मान जाएगा. Swapnil, I think, wrote general claim. Yes, Swapnil, I just saw your message. Yes, you got it. Yeah, absolutely. Extreme, no, this is not extreme. Okay, it's called a general one. Yes, Tarun, that's correct. Yes. I think this one you all would get right. ये काफी easy भी है. If you can eliminate wisely, otherwise तो मुश्किल है. Chalo. Let's see everyone. What is the correct answer? Samriddhi on the app says A. Okay. But I'm waiting for the others on YouTube.
Sanjay A, Divyanshi A, Devishri A, Sairaj D, Akashdeep A, Ananya A. All right, everyone. Mahip C. All right, chalo, let me help you with the answer. But I'm very glad to tell you that you guys are doing it very well. In some way, at some point, a once sound principle for living up was perverted into the false and malevolent notion that money is the root of all evil. क्या कह रहा है ये कह रहा है कि पहले earlier it was supposed to be correct, but now it is believed that money is the root of all evil. Nowadays, money is blamed for all evil. Contrarily, however, the judicious use of money provides us with the necessities like food, clothing, healthcare, and shelter essential for sustaining our lives. What is the author saying? The author is saying that people say that money is the root of all evil. However, if you use it wisely, it gives us food, clothing, shelter, healthcare, सब कुछ मिलता है यहाँ से. The author's argument is logically flawed. That in what sense? Now look at the statement or the argument, everyone. Author makes a statement that people say money is the root of all evil, and then he says, but if you use it wisely, it can give you A, B, C, D. Now let's start with Ulta, option D. Fails to acknowledge that food, clothes, healthcare, and shelter can sometimes lead to evil. Not even related, right? Ignores some of the evil things that money can buy. Okay option, right? Money is the root of all evil, and then the author says, but it can buy us necessities like food, clothing, healthcare, and shelter. So I can say logical flaw is he ignores some of the bad things that it can buy, guns, drugs. Okay. Uses inappropriate examples. He uses absolutely appropriate examples. Money can buy these, and these are necessities. Wrong. Uses examples that do not refute the generalization that all evil is rooted in money. This option is very interesting. This option says that the flaw in the logic is that he is not using examples to contradict this statement. If you say money is the root of all evil, then you should talk about those things that are root of all evil, or you should give examples that will refute directly that all evil is rooted in money. You are wrong. There are evils which are not rooted in money. What is this person? What is it that the person should have done? Person says money is the root of all evil, and he is trying to refute it. So what should have he said? He should have said, money is not the root of all evil. There are other roots also. And you should have given example of those roots, but it does not do that. That's a logical flaw. Now, ignoring some of the evil things versus not giving proper examples to refute the claim. Which one is a better one? Obviously A. Therefore, the correct answer is A. Is this clear, everyone? I hope it is clear. Karthik, is it clear why the answer is not C? C is a decent choice, not absolutely wrong choice, but not the correct answer. Right? So Mahip, is it clear why C is not the correct answer? Gurmeet, Mahip, oh Mahip, your answer changed. Gurmeet, clear, right? Samriddhi, hai na? Well done, you got it right. Chalo. Correct, direct. That's correct. Absolutely. Absolutely. So let me pause it here, and before I let you go, because this was the last session for CR before CLAT, though we would meet for marathon, definitely. Marathon mein zarur aana hai sabko. But this was the last one for CR. Please remember, everyone, don't do anything new. If you are very weak in something, just forget it now. Focus on moderate and strong areas, right? In CR, remember, conclusion, inference, assumption, strength and weaken, 70 to 80% questions would come from these 5 areas. If you don't, you haven't done anything else, just forget it. Just practice these areas, revise them. Ekad questions kar lo. Don't take more than 3 mocks probably in 6-7 days time, because otherwise you would end up being depressed or being demotivated or something like that. Now you should start chilling a bit, little bit of watching good movies and motivational stuff. या थोड़ा फन स्टफ भी कर सकते हो, थोड़ा फनी फनी कर लेना, बट डोंट ओवरडू इट, है ना.
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर एवरीवन. 1 दिसंबर को याद रखना 9 o'clock आप 6 hour नॉन स्टॉप मैराथन करेंगे एंड टाइमिंग आई थिंक शुड बी 11 o'clock. एंड 3 दिसंबर को 5 बजे के बाद आ जाना क्लैट डिटेल्ड एनालिसिस के लिए. रात के 9 बजे शुरू करेंगे तो फिर सुबह के 5 बजे तक करते रहेंगे क्या, है ना. तो ये मिस मत करना एवरीवन. 11 बजे है ये मैराथन. सो आई विल सी यू on marathon, and of course all the very best everyone for CLAT. Make sure you go there, concentrate, and of course be the best that you can be. I'll see you again everyone. Thank you so much for joining me here. Detailed analysis miss mat karna. ELET का भी होगा और CLAT का भी होगा. So I'll see you again everyone. Thank you so much for joining me here. Good luck. All the very best.